professions as you know it today will become meaningless. So many of you will be out of your vocation unless you do something that a damn machine cannot do. So, in today's technological world, we know that artificial intelligence and robotics are taking over. Um, those are the cutting edge technologies. So, what is your take on the interaction of such technologies with the uh, intersection? पहले हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दूसरे यूट्यूबर्स को भी पूछा गया था, जिसमें उन लोगों ने बेसिकली क्या बोलूँ अब, गुरुजी का ही मैंने वर्ड से इंस्पायर्ड हुए थे या फिर उनके जैसा ही आंसर दिया था, विच इज़ अ गुड थिंग। बहुत अच्छा बात है, क्योंकि अभी चारों तरफ इन्हीं का आवाज़ सुनाई देगा, आई थिंक मोस्ट लाइकली इन द फ्यूचर। क्योंकि शायद मुझे लगता है गुरुजी चाहते हैं कि मेरे आवाज़ को सब लोग रेप्लिकेट करें। Of such technologies and ancient practices such as meditations and yoga. Are you sure I'm real? Because लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो इट्स फ्री। हम लोग एंड में इसको हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या चल रहा है इसका, है ना, और एक्चुअली डिफरेंस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन में। ओके, पहले हम लोग गुरुजी का आंसर सुनते हैं विदाउट इंटरप्शन, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। ओके, सो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और आने वाला है। last year and a half, they've been inviting me to speak in all sorts of artificial intelligence conferences in the world. I was just surprised, why are they asking me to come and speak about artificial intelligence, because I'm not an expert in the field, nor am I an artificial intelligence. So I asked them in one of the conferences, it was in St. Petersburg, I said, why are you guys inviting me to all these artificial intelligence conferences? I'm a natural intelligence, not an artificial intelligence. They said, the problem is, what are we going to do? We're going to lose our jobs. These are all professors in big universities, in MIT and in Harvard and these kind of places. They're asking me, what are we going to do in another 10 years' time? Because everything that we know, everything that was sacred till now, suddenly is going to be there on a little gadget. You must understand this, what artificial intelligence means is accumulation of information, analyzing it and projecting it the way you want at a given moment, will no more be considered as a valuable thing in human faculty. Because a simple gadget will do it much better than any human being. Already that Google lady is looking smarter than any of you, isn't it? She looks smarter than me, it's okay, I'm not educated, but you guys she's looking smarter than any of us or no? Anything you ask, without batting an eyelid, she tells us. So, it's going to that place where intellectually everything that you perform will look stupid or meaningless. This happened to me when I was about 13 years of age, I think, 13 or 14, 13 I think. For the first time I saw a flatbed calculator, this Panasonic calculator, you know. At that time it was 110 rupees, very expensive. You drink a coffee for more than that today. But 110 rupees, Panasonic, Sony was 125, so we buy the cheaper one, 110 rupees Panasonic. And they show me this, I never bought them. Somebody brought one and they showed me, tuk, results. Then first thought that came to me is, why the hell am I wasting my life in the mathematics classes? I said, all I need is this, I don't have to go to the math class. Whatever question you ask, tuk, a 100-rupee thing can tell you why this torture for 10 years, going through
this arithmetics and mathematics and all kinds of things. It can even do sin theta, cos theta, whatever nonsense you want. Then only I thought, we must make a big machine which does all this rubbish so that I don't have to go to school. At last, the dream is coming true. In the next 10-15 years, the education as you know it, professions as you know it today will become meaningless because right now, they've created these machines. Right now, we are still kind of obsessed with creating machines which look like us, which is unnecessarily complicating. It can be a square box which walks everywhere and does everything we do. It's too insulting for human intelligence. So, we're still making it look like a human being. If something is intelligent, it must look human in our mind. But slowly, for the sake of economics, somebody will make one tall box which does everything that you do, okay? Time is coming for that. So once this happens, many things that we are spending years on learning will be meaningless. Now they built a thing, I was meeting this one top real estate guy in Russia. They're designing something that if a customer comes and says, what kind of house I want, what is my aesthetics, what is my culture, what I like, how it should be, and what's my budget. A machine designs a complete house, 10 different alternatives that you want, including paintings, hangings in the wall, the furniture, the works. Now they're saying in another 5 to 7 years, they're saying it can even print the house and build it. So just imagine the design guys. So many of you will be out of your occasion unless you do something that a damn machine cannot do. All of you should gear yourself for this now. You must be able to do something beyond your intellect. Human being has many layers of intelligence. Intellect is only a small part of it. Right now, our education system is completely dedicated to intellectual development of the human being and we think that's the grandest way to live. No, it is not. We can explore that if we have the time. But in the yogic way of looking at things, we look at human intelligence as 16 parts. If you explore other dimensions of intelligence, only then you will be relevant when everything intellectual. Intellectual means your intellect cannot function without accumulated data. Yes or no? Hello? Yes. Your intellect cannot function without accumulated data, is that so? Now, whatever is data assimilation, analysis and execution of that analysis, a machine will do better than you. A human being can always make mistakes, can always fudge information, but a machine is clear-cut. It will simply do those things. So everything that you can do intellectually will be meaningless in another 10 to 15 years' time. Maybe in India it will take 20 to 25 years' time, but inevitably it's going to happen. So you must be equipped with something beyond your intellect. When I say beyond your intellect, there are many ways to look at it. I will make a simplistic example. Simplistic because if we go into more sophisticated examples, we'll have to do a lot of exploration. We don't have that kind of time today. For example, what did you eat for lunch? Maggie. You are on Maggie? Can't you… somebody take care of his nourishment? He's on Maggie? Okay, even if you eat the noodle, a noodle doesn't look like him, doesn't feel like him, nothing. But this noodle he eats, within 3-4 hours' time, this Maggi noodle has become a human being, isn't it? Yeah, part of it. It's become part of the system. So you are manufacturing such a complex machine with Maggi noodles. This is like a 3D printer. You put Maggi noodles into it. No, I am not made of Maggi noodles, okay? I eat better than that. But you put the chapati into this becomes a human
body. This is the most sophisticated machine on the planet. You're manufacturing this with whatever food that you eat. And the food that you eat is just the soil that you walk upon. Yes or no? And it stands up. Isn't this a 3D printer? Hello? Does that intelligence exist within you or not? Not even in your brain, in your gut? It does. It does. So if only you found conscious access to this dimension of intelligence, you would live magically, isn't it? Then artificial intelligence won't disturb you, you will be very happy because all the menial jobs if the machines do, what a wonderful world. I'm looking forward to that. Sadhguru, this question is something which many of us will be able to relate with. So people are going ओके तो अभी हम लोग को यहाँ तक पता चल गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसको क्या है ना, ये क्वेश्चन जब भी बीच होता है तो वो इन्वायरमेंट के हिसाब से आंसर देते हैं। हम लोगों ने ये इस आंसर को देखा, आपको क्या लग रहा है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है या फिर नहीं सेटिस्फैक्ट्री, आप बोलिए। हर समय हम लोग आते हैं और हम लोग को आंसर मिलता है कि हम लोग का माइंड का पार्ट्स कितना है ये वगैरह, लेकिन एक्चुअली जो कहने का बात है वो गुरुजी ने कह दिया है। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक मेमोरी बेस्ड चीज़ है, ठीक है। इसमें हम लोग एक इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, इसमें नया कुछ नहीं हो सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कर सकेगा लेकिन मेडिटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्योरली ह्यूमन है। हम लोग और देखते हैं काकू के टाइम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय गुरुजी ने कैसे आंसर दिया था उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। हम लोग उसको दूसरे वीडियो में भी डिस्कस कर सकते हैं। Can do, a machine can do in future, and that will be a great day because that means we are on a holiday. Your technologies will bring comfort and convenience, will not bring well-being. Right now, your well-being is still determined by what's around you, not what's within you. Anything that can be built by storage of memory and access to memory and analysis of this memory and expression of this memory, everything that you're doing through your intellect and thinking that is you, can be done by a machine at some point. I'm not the expert to predict when, but definitely it can be done, there's no question about that. But there's another dimension of intelligence within the human being, which we refer to as chitta. What chitta means is, this is a dimension of intelligence where there is not an iota of memory, it is unsullied by memory. What this means is… एक सेकेंड। सबसे पहला बात ये है कि हम लोग को ये डिफरेंशिएट करना है कि माइंड के पार्ट्स के डिटेल क्या चीज़ है। जिस तरह से गुरुजी बार बार बोल रहे हैं कि माइंड हम लोग का 4 भाग में बटा हुआ है, ओके, मनस, चित्ता, अहंकारा। तो हम लोग थोड़ा सा बोर्ड लेके इसको डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ा आए इसमें। मनस, चित्ता और अहंकारा, ठीक है। तो मनस क्या है, चित्ता क्या है, अहंकारा क्या है? अभी रिसेंटली हम लोग को एक चीज़ तो समझ में आएगा, चित्ता एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई मेमोरी नहीं है। देखिए, जिसको प्योर कॉन्शियसनेस बोलते हैं। यत्स ब्राह्मणी रमते चित्ता नंदति नंदति नंदे देवा, ये इनका एक गाना है। जिसने चित्ता को टच कर लिया उसने लाइफ को जाना है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग को एक आइट ऑफ मेमोरी नहीं है। तो ये एक्सपीरियंशियल डायमेंशन है, इसको आप एनालाइज नहीं कर सकते हैं। अब हाँ, अब ऐसा अब क्या, लेकिन एक सेकेंड, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी अगर अनुमान लग जाएगा, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रोस्टिट्यूट के बारे में,
ठीक है। वो गौतम और सिद्धार्थ का एक स्टोरी है जिसमें वो जाते हैं आपका जंगल में जाते हैं और उन लोग रहने का जगह नहीं रहता। एक प्रोस्टिट्यूट ने बुलाया होता है सिद्धार्थ को और सिद्धार्थ चला जाता है। रात को रहने के बाद वापस जब आता है वो मॉन्क बन के आ जाती है। कहने का मतलब उन बुद्धा जी को इतना ये था, श्योरिटी था कि मेरा जो वे ऑफ लिविंग है दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लिविंग। ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग को लगता है कि हम लोग का जो तरीका है वो सही है, वो सबसे बेस्ट है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ये हम लोग का थोड़ा सा गलती हो सकता है, इसमें हम लोग थोड़ा सा गलत हो सकते हैं। बस यही चीज़ हम लोग को समझना है, क्योंकि हम लोग के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में हम लोगों को लगता है कि हम लोग को पता है, लेकिन एक्चुअली नहीं होता है। ठीक है। तो यही हम लोग को रखना है मेन पॉइंट। और दूसरा चीज़, अरे ये क्या हो गया, मैं एक्चुअली आपको लिख के समझाना चाह रहा था। ये memory तो अभी इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सिद्धार्थ के पास वो क्यों वापस आ जा रहा है, वो मॉन्क बन के क्यों आ जाती है ये प्रोस्टिट्यूट, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वे टू लिव। ओके, उनको पता चल जाता है कि दैट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे बेहतरीन वे ऑफ लिविंग है। कहने का मतलब जो पैसे के पीछे भाग रहा है, जो लड़की के पीछे भाग रहा है, जो नाम, फेमस, पॉवर्टी, पावर के पीछे भाग रहा है, यहाँ तक कि जो प्रोस्टिट्यूशन के पीछे भाग रहा है। ठीक है। अगर ये सब चीज़ सारा मिला के तुलना भी कर दें, बात समझिए मेरा, आपको ये सब दे के, जैसे अब मान लीजिए अभी सबसे बेस्ट क्या लगता होगा, अंबानी बन जाए ना, आपको अंबानी, अदानी, जेफ बेजोस सबको मिला के, ठीक है, सबको मिला के जितने पूरा वो लोग अपने लाइफ टाइम में पूरा माने इन सबको जोड़ के और जितने भी माने 1 करोड़ ऐसे आदमी को जोड़ के, ठीक है, 1 करोड़ ऐसे आदमी को, समझ लीजिए 1 करोड़ ऐसे आदमी का मस्ती को जोड़कर आप जो डेफिनेटली जो लड़की लोग, जिसके हज़ारों लड़कियां हैं, ये सब मस्ती को जोड़ के आप अगर तुलना करें, ये लोग पूरा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस, पूरा लाइफ टाइम का मैं बोल रहा हूँ, और गुरु जी का एक दिन का एक्सपीरियंस गुरु जी का एक्सपीरियंस कितना बार जीतेगा पता है? 10,000 टाइम्स मोर रहेगा, एक्चुअली उससे भी ज़्यादा रहेगा। तो अब आपको अब तुलना मिल गया भाई कि क्या बात हो रहा है। मुझे जब लगा कि मैंने भी गोल्ड माइन हिट कर दिया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाप रे बाप, क्या बेवकूफ़ी में बैठे हुए थे, जब यहाँ पर सोने का भंडार है और हम लोग चिल्लर से भी 10 पैसा, कहने का मतलब माने जो दूसरे लाइफस्टाइल में है, ये रिलीजियस नहीं है, सबसे पहला बात है। दूसरा, जो भी दूसरे लाइफस्टाइल में है ना, उतने माने 1 करोड़ आदमी का पूरा लाइफस्टाइल जोड़ के पूरा लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस एक दिन में, बता रहा हूँ ना, एक दिन में, इससे भी ज़्यादा, माने वो भी 1000 में बताया ना, तो आप तब जाके आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों प्रोस्टिट्यूट को ये एनालाइज हो गया था। तब उसने वो छोड़ के बोले कि नहीं भाई, ये तो क्या बेवकूफ़ी कर रही थी मैं, चलो इनके साथ जाते हैं। ठीक है। बुद्धा जी ने क्यों कहा था कि दिस इज द मोस्ट पावरफुल वे टू एग्जिस्ट। वो राजा थे भाई, राजा के बेटे थे, वो जिसको चाहते उसको शादी कर सकते। क्यों? उन्होंने कहा कि
दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल वे टू। कितना कॉन्फिडेंस क्यों था, क्योंकि ये लोग टेक्निकली स्पीकिंग उस डायमेंशन को टच कर रहे थे अपने अंदर में, जिस डायमेंशन के बारे में आदमी को पता ना होता है, ना पता होता है, ना कुछ आता होता है, ठीक है। और ऐसा कुछ चीज़ तो आदमी के नॉलेज में भी एग्जिस्ट नहीं करता। आज हम लोग क्यों इस वीडियो को बना रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि इतना बड़ा ऑप्शन है हम लोग के आगे, और हम लोग चिल्लर में इतना खुशी मना रहे हैं भाई साहब। मुझे अब गुरुजी जब बोल रहे थे, मैं आँखों में पूरा आंसू भर के आ रहा था जब मैं आश्रम में, मैं यहाँ पर एक्सटेसी में ब्लीड कर रहा हूँ, एक्सटेसी में बस्ट कर रहा हूँ, हाँ, और ये लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उनको पूरा आँख में आंसू आ गया था। पूरा आँख में पूरा आंसू इसलिए आ रहा था क्योंकि भाई मैं क्या एंजॉय कर रहा हूँ और इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह से रो रहे थे। अब जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कुछ बातें, है ना, इसमें से मुझे नहीं लगता कि 1% आदमी लोगों को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, क्या ऐसा इतना बड़ा पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है, क्या बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हो आप। तो नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर, मैं क्यों टाइम वेस्ट करता हूँ, कुछ सोने का टाइम हो गया भाई। तो बस यही चीज़ है कि आप समझ लीजिए कि कुछ बड़ा तो है। तो यही बोल रहे थे कि जो चित्ता को टच कर देता है उसको भगवान माना जाता है। वन whoever has touched the चित्ता is almost like a god। तो उसी पॉइंट को हम लोग रख रहे थे। और दूसरा पार्ट ऑफ द माइंड में अहंकार, ठीक है। अहंकार का मतलब ये होता है आइडेंटिटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन करूँगा, इतना बार एक्सप्लेन करूँगा जिस तरह से गुरु जी ने सब यूनिवर्सिटी में जाके कम से कम एक बार तो ये चीज़ बोला है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अब तक आइडेंटिटी नहीं समझ में आ गई, क्योंकि गुरु जी क्या करना चाह रहे हैं आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। वो पीस टॉक नहीं कर रहे, वो पीस बना रहे हैं। पीस बनाने का मतलब ये नहीं कि वो खुद इतना पीसफुल है कि उनके पास ये क्षमता है, वो आराम से पूरे दुनिया को पीसफुल बना सकते हैं, ठीक है। और और क्या बताऊँ, जितना भी बताऊँ कम है। बस कभी कभी तो जो भी गुरु जी को मानते हैं ना, मानना नहीं पड़ता, जो एक्सपीरियंस किए इनको, उन लोगों को सबको पता है कि अगर इस फोटो के आगे अगर बैठ जाए हम लोग दिन भर तो एक्सटैटिक होकर बैठ सकते हैं, इतना पावरफुल है। अब क्या बोलूँ, अब समझ में तो It's what has made you everything that you are. You have a human form, this is evolutionary memory. You have variety of other memories, that's what makes you a certain kind of person, and so many other things that you are. Your professions, your capabilities, your knowledge, everything is because of memory. But memory is also a defining boundary. The moment you identify with your memory, you say, oh, this is my friend, this one I do not know, this is a person I like, this is a person I don't like, this is all memory. Memory fixes a definition and a defined boundary to your life. What is me and what is you is just a question of memory, that I know this is me and this is you. But there is a dimension of intelligence which we call as chitta, or in modern terminology loosely, it can be called as consciousness. Not being conscious as you and me are, this is wakefulness, this is not consciousness. So, this dimension of intelligence has no memory in it. Where there is no memory, there are no boundaries to it. You will not do that with a robot. Do what you want. Because everything that can be done by memory will be done. Right now, 90% or more of humanity lives by their intellect. आपको एक बात बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, कि जो देव से आप इस चीज़ को देख रहे हैं ना,
वो माने काफ़ी गहराई पर जाता है। तो हम लोग कभी भी ये डिस्कोर्स या फिर बात सुनते हैं ना, इसको हम लोग कैजुअली ले रहे हैं ना, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि आप अगर इसमें ज़्यादा फोकस करके आप इसको ध्यान देकर सुने ना, ये आपकी पूरे लाइफ को बदल सकता है। कहने का मतलब आप जेफ बेजोस से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, और वो भी 10 मिनट में। इन द सेंस क्वांटिटी हिसाब नहीं, आपके लाइफ की क्वालिटी हिसाब, जिस तरह से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इस चीज़ को। दूसरा चीज़, इनका ये आंसर जो इन्होंने दिया है, वो आंसर कॉपी किया गया है। एक्नोलेज किए करे या ना करे उससे मतलब नहीं, लेकिन गुरुजी का सब चारों तरफ फैला है। दैट इज़ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। And their physiological and intellectual capabilities. These things can be built at some point and make them look very real. So once machines start doing this, it is inevitable, it is inevitable for you to explore the deeper dimensions of who you are. Maybe 500 years ago, let us say, if you want to be a big man in the place, in your town, you had to have big muscles. Whoever had the big muscles was the big man, strong man there. But now if you have big muscles, we will give you a menial job. We don't recognize you. One reason why women have an equal space or reasonably equal space on the planet today is because of technology, because the power of the muscle has been neutralized. How much brain power do you have, how much intellectual power you have is deciding things right now. But if intellectual power is taken by the machines, naturally human beings will dig deeper into their consciousness. A machine cannot dig deeper, but everything that you can do, a machine can do in future, and that will be a great day because that means we are on a holiday. We don't work for a living. Now we look at life in a completely different way, which will be very, very significant. In fact, for the first time, we will become human beings. We must understand why we are called human beings. That means we are the only creatures on the planet who know how to be. Without a social atmosphere, many of you will not know how to survive. A bug knows how to survive far better than you, better equipped than you, because he's just focused on his survival. But a bug will not know how to be conscious. You can definitely build a bug. It's very interesting that today in the computer technologies we are using these words, that's a bug, it's a virus. Definitely. The dangers of this are also there, as the dangers of machines are there even today. For example, the automobiles are killing more people than wars. Every year, year after year, they're killing. But we have accepted that as collateral damage, it's part of the thing. We're traveling faster, so some people will die. We have come to terms with that. So similarly, maybe we'll have nano-soldiers. Soldiers won't be human beings going and fighting. We sit here and let loose on other people. At one phase it will happen. These things will be terrible, but even now it's terrible. You can just press a switch here and destroy a whole city somewhere else. As these capabilities are coming, we must also strive to upgrade the human being to move beyond the limitations of their intellect and come to a deeper dimension of intelligence, which is life itself, the very source of life itself within us. We have to invest in consciousness. काफ़ी ध्यान से आदमी लोग सुन रहे हैं भाई अभी तक ऐसा बुक कभी नहीं आया होगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, गुरुजी हर स्टेट में हर जगह में जा रहे हैं और एक चीज़ बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट, इसमें आदमी को डिफरेंस करना नहीं आता है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है इसमें। आप लोगों को समझ में आ गया क्या? मानना कुछ नहीं भाई, अपने आँख में झोंक के देखना है, क्योंकि देखना अपने आप में ही है। काम है थोड़ा सा समझा दिया जाएगा, लेकिन आपको देखना अपने आप में। इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का क्या डिफरेंस है?
इसमें कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस का क्या डिफरेंस? इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस में आपको ये समझ में आना है कि इंटेलेक्ट जो है वो एक माइन्यूट चीज़ है, इंटेलिजेंस जो है वो सोर्स ऑफ लाइफ है, माने ये एक्चुअल इंटेलिजेंस है, ठीक है। इंटेलेक्ट वो मेमोरी बेस्ड है। तो इंटेलेक्ट में हम लोग जैसे माइंड के पार्ट्स में हम लोगों ने बताया सबसे इम्पोर्टेंट अहंकार ही है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी बोल रहे हैं। इस चीज़ को हम लोग नहीं क्लैरिफाई कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा भयानक चीज़ हो सकता है। और यही प्रॉब्लम है कि अभी एक आदमी दूसरे आदमी को क्यों मार रहा है, क्योंकि उसका आइडेंटिटी अपने छोटे से चीज़ से है। एक आदमी क्यों दूसरे आदमी का रेप कर रहा है, क्योंकि उसका आइडेंटिटी उसके सिर्फ शरीर से। हम लोग ने बाकी बात में भी वीडियोज़ वगैरह में बताया था, लेकिन ये इतना बार बोलूँगा मैं कि किसी ना किसी को कहीं ना कहीं तो सुनाई देगा ये, क्योंकि यही सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। अगर हम लोग का आइडेंटिटी ग्लोबल रहता है, बड़ा आइडेंटिटी रहता है ना, तो डेफिनेटली कम से कम पृथ्वी का आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ये चीज़ मुझे ठीक से समझ में आया, और ये समझने की वजह से मैं बच्चे लोगों को भी समझा सकता हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हो तुम इंडियन हो, तुम कहाँ के हो, मैं बताया इंडियन, अमेरिका, यूएस, यूके, चाइनीज़, जापानीज़, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे डोंट एग्जिस्ट। बात समझ में आ रहा है ना आपको? एग्जिस्ट करते नहीं, ये हम लोग ने अपने आप बनाया हुआ एक मनगढ़ंत कहानी है, माया जिसको बोलते हैं। क्योंकि इस संसार में सिर्फ दो ही प्रकार के आदमी एग्जिस्ट करते हैं, और ये मैं अपने बच्चे के दिमाग में पहले से डाल दिया हूँ कि आदमी सिर्फ दो टाइप का होता है, कोई कंट्री से नहीं, कोई रिलीजियस से नहीं, एक अच्छा और एक बुरा। जो अच्छा काम करता है, जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम नहीं है, एक जो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग कम होते गए और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ज़्यादा होते गए ना, तो वर्ल्ड विल बी पीसफुल। बस यही चीज़ ये अभी जीवित इसीलिए, नहीं तो धानालिंगा के बाद वो काम ख़त्म करके चले जाते। पहली बार भी 7 चक्रा में एग्जिट किया था, अभी महासमाधि में जाने को 10 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन वो रीज़न इसलिए बैठे हुए हैं इतना बड़ा टेम्पटेशन को छोड़ के, है ना। क्योंकि आप प्रसून जैसी के पिछले डिस्कशन में हम लोग देखें कि लाइफ वांट्स टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज का मतलब ये है कि लाइफ इवॉल्व कर रहा है, पुराना नहीं है, हर चीज़ नए बार नए हो रहा है। अभी बच्चे का दिमाग देख रहे कितना तेज है ना, तो लाइफ क्या चाहता है कि इवॉल्व करना चाहता है, ठीक है। और गुरुजी जो महासमाधि का बोल रहे, ये एक हाईएस्ट लेवल ऑफ इवोल्यूशन है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको सिंपल आसान में हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, गुरुजी ने एग्जाम्पल लिया था किंडरगार्टन स्कूल में। मान लीजिए आप किंडरगार्टन स्कूल से क्लास 5 तक पहुंच गए हैं, आपको अगर फिर से किंडरगार्टन में भर्ती किया गया, आप मानेंगे? आप नहीं जाना चाहेंगे ना। आपको क्लास 6 में देखना है, क्लास 7 को देखना है, क्लास 12। अब मान लीजिए आप 12 पार किए, फिर से आपको किंडरगार्टन में डाल दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? तो किंडरगार्टन में यार LKG 1 2 3 पर तो हम लोग पढ़ा हुआ है पहले। आप कॉलेज में ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, 15 साल पढ़ लिया, आपको PhD करना है, लेकिन आपको फिर से किंडरगार्टन में डाल दिया जाए, तो ये होता है दूसरा जन्म। रीबर्थ का मतलब ये है कि आप एक यहाँ से पहुँचे 80 साल तक, फिर से आपको किंडरगार्टन में, माने फिर से आपका जन्म हुआ, ठीक है, किंडरगार्टन में। PhD का बात छोड़ दीजिए, किंडरगार्टन, फिर से आपका दूसरा बार जन्म हुआ, वो भी किंडरगार्टन में। फिर से आप, कहने का मतलब आप किंडरगार्टन से शुरू करते 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 ही जाएंगे, ये बोलते हैं लाइफ। और यही इसी चीज़ का कॉन्शियसनेस जो है इंडियन लोगों में काफ़ी ज़्यादा था। वो लोग समझते थे कि मुक्ति का मतलब ये होता है कि मैं ये साइकिल से दूर होके नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में चले जाओ, है ना, मतलब PhD करो, है ना। नॉर्मली आप PhD करना चाहते हैं या फिर कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, आप फिर से किंडरगार्टन में तो जाना नहीं चाहिए आपको, अगर आपको पता होता तो, है ना, है ना। तो यही चीज़ ये बता रहे हैं कि आप 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 इवॉल्व हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होता है टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। नेक्स्ट लेवल तक हम लोग पहुँचा। तो वो प्रश्न की जो डिस्कशन थे उसमें हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन किया था। तो अभी अभी फ़िलहाल जो आइडेंटिटी का जो इशू है ना, ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर मैं छोटा आइडेंटिटी ले रहा हूँ, डेफिनेटली मैं दूसरा जो आइडेंटिटी है उससे घृणा करूँगा, उसको मैं अटैक करूँगा, ठीक है। तो मैं बच्चे के दिमाग से भी ये सब निकाल दे रहा हूँ कि
ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है जिसमें धर्म विवाद ये सब नहीं, सिर्फ दो टाइप के आदमी होते हैं, एक सॉल्व करने वाले, एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो गुरु जी का यही मेजर एम है कि ज़्यादा सोल्यूशन को बढ़ा दें। अगर आप देखें बहुत सारे जगह में मुझे बहुत खुशी होता है क्योंकि आदमी लोग सोल्यूशन के बारे में अब ज़्यादा बात कर रहे हैं, है ना। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट हम लोग को ये याद करना है कि सोल्यूशन को हम लोग को ज़्यादा बढ़ाना है, प्रॉब्लम को कम कर देना है। अगर आप सोल्यूशन के साइड में बस, और कुछ देखना नहीं आपको, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, रास्ता आपका सही है। Till now, we've been investing only in our survival. But once the technologies that they're talking about starts becoming a reality, which is already becoming, survival, we will definitely start investing, but the sooner we invest, with less aberration, we can move into these new possibilities. It's always a double-edged sword. Which way are you going to use it depends on who you are, isn't it? So whether your identity and your experience is very exclusive or your identity and experience is very inclusive, this will determine which shape and in which way the sword will swing. So it is time we make that voice which refers to a dimensionless, a boundaryless consciousness heard, and methodologies as to how to become conscious, as there are technologies to create well-being in our surroundings. There is a science and technology to do the same within us. So, this is not today's thing, this has always been there, it's as old as humanity. But in some generations it is heard loudly, in some generations it sinks, and accordingly human well-being rises and sinks. Any amount of technology, if you don't know how to be, you still are not well. See, look at our own state right now. As a generation of people, we know more comfort and convenience than any generation ever knew in the history of humanity. But can you claim you are the most joyful and fantastic generation ever? No. People are becoming neurotic. I am not saying we're worse than other generations, but we are not significantly better for the amount of toll we have taken on every other life to have what we want to have. So, your technologies will bring comfort and convenience, will not bring well-being. It's time to focus on that, because already we are at a place where technology is going through the ceiling, we are not matching up. It is like, right now, your well-being is still determined by what's around you, not what's within you. So this doesn't mean love thy neighbor, be like this, go be a good person, be a noble person, this is not about that. Your body and your brain should take instructions from you. If your body and your brain take instructions from you, would you keep yourself healthy and blissful every moment of your life? I'm asking you. If you had a choice, definitely you would. So obviously your body and your brain is not taking instructions from you. This means you're not conscious enough. So we have to invest in that direction. One thing is, if you walk through this city, I'm sure there are hospitals, there are schools, there are toilets and there is everything. But do you have a place where there is a place for people to meditate? There's no such thing. Eastern societies invested heavily in the past in that direction, but today they are also emulating the West and trying to compete with them, losing out on this. But the need for inner well-being will become very strong in the next 20-25 years when technology starts doing most of the things that you're doing and you don't know why you exist. Then the need for well-being becomes super strong. So, if we want to be ready for that day, it's very important that we invest both physical infrastructure and human infrastructure which focuses on the innermost core of who we are.